गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज में फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइज। दिस एंटरप्राइज आर नेसेसरी फुली ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल एंड द मैनेजमेंट। कहते हैं कि मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर सबसे ज़्यादा फुली ऑन कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। इस एंटरप्राइज के अंदर इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आती है जो मैनेजमेंट को चलाती है, जो कंट्रोल करती है। फिर क्या कहता है आगे, कंट्रोल आर विद द मिनिस्ट्री कंसर्न। इनका कंसर्न किसके साथ होता है? मिनिस्ट्री के साथ। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु वर्क्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल द मिनिस्ट्री। इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस में, उसके गाइडेंस में काम करते हैं और मिनिस्ट्री कंट्रोल में सारा काम होता है। एवरी ईयर द बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ ऑब्टेन। प्रत्येक साल बजट बनाया जाता है और गवर्नमेंट इसे क्या देती है? अप्रूवल देती है। ए रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज prepared and sent to the Parliament, State Assembly. Ministry concerned with the departmental organization is accountable for the success or failure of the department. हर डिपार्टमेंट क्या करता है उसका जवाब देगा कि किस कारण से उनका डिपार्टमेंट सक्सेस रहा या क्या कारण रहा वो फेलियर हुआ। इस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पब्लिक एंटरप्राइज का एस्टेब्लिश किया जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। In India, chief enterprise are established in the form of departmental enterprise. First है the Indian Post and Telegram Department। कौन चलाता है इसको? Which is run by the Ministry of Communication. The Indian Railway, which is run by the Ministry of Railway. Similarly, All India Radio, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज, ऑर्डेंस फैक्ट्री, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फॉर्मेशन, दीज आर फॉर्म एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पेशल मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, हर खुद की क्या होती है, सबकी एक अपनी अपनी मिनिस्ट्री है। ऑनरशिप, देयर ऑनरशिप लाइज कंपल्सरी विद द गवर्नमेंट। Management, these are managed by the ministry concerned. The secretary of the department is their chief executive officer. Financing, their financing is completely done by the government through general budget. They have no right to borrow from public. ये public से उधार पर नहीं ले सकती। They draw money from the government treasury for their daily expenses. Their income is also deposited in the government treasury. Appointment, the appointment of the undertaking are made through the Union Public Service Commission (UPSC) and Staff Selection Board. This department may have their own staff selection board. For example, Railway Services Commission is formed by the Railway Department. The employees of the department undertakings are the government employees. No separate existence. These undertakings do not have the existence of their own. In other words, they cannot have any property in their own name. They cannot file any court case against anyone without the permission of the government, and nobody can sue them. Administrative autonomy. They do not have any administrative autonomy because they are in the form of the government department. There is a regular political intervention in their operation. Next आता है merits of the department undertaking. Easy formation. These undertaking are formed very easily. Our registration is needed for their formation. They are established by the administrative order of the government. Next है effective control. The management of these undertaking under which the rules and regulation
their relevant ministry. Apart from the work is done by educated and the trained officers. As a result, the effective control can be achieved. Increase in the government income. The income passed by the activities of these activities. In fact, the income of the government, thus the earned income add to the government income. Decrease in the tax burden. Government put taxes on the public to meet the expenses. There is a need to the natural fulfill as soon as the department undertaking have been the income. As a result, the government lessens the burden of the tax on the public. Easy financing. Financing become very easy, managed by the government. Proper utilization of the fund. All the activities of these undertaking are done by the approval of the government, and the official have the complete control over the no misutilization of the funds. Next आता है limitations of the departmental undertaking. First आता है lack of the paramount action. Centrally कहते हैं control, manage and the ensure the generally causes delay in the taking decision. Consequently, no quick decision and why many opportunity for earning profit is missed. Lack of the flexibility. There is a lack of the flexibility due to the strict government rules essential for the successful operation of an undertaking. Lack of incentive. Ordinarily, it may be the powers with the official them to the work earning the maximum undertaking, but it's the make the department undertaking have very limited powers. With the result, they do not any special effort to the maximize income. Lack of competitive feeling. These undertaking do not have the special attention to pay losses for the want competitive feelings. The lack of the profit motive. Not only this, the careless about the interests and the needs of the consumer. Increase in the tax burden. The burden heavy loss of the department undertaking, the government exchequer, the government lies tax on the general public to the company such losses. More political intervention. Department undertaking are run by the supervised by the ministry. The ministry being a representative and the political party gives more priority benefit of the parties than the benefit of the country. Red tapeism. Excessive paperwork होता है. Habit of not finishing the work give the rise of the red tapeism. Consequently क्या होता है? Heap of the files tied in the red tape and no work comes to an end. इसी कारण से क्या होता है कि उनके ऊपर लाल तरह का क्या होता है फाइल्स के ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आगे काम नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि पेपर वर्क क्या होता है उनको आदत नहीं होती इस काम को पूरा करने की. यूटिलिटी कहाँ पर है डिपार्टमेंट टेकिंग की? वेयर द कंप्लीट कंट्रोल द गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर द पब्लिक वेलफेयर, वेयर सीक्रेसी प्ले ए वाइटर रोल, फॉर एग्जांपल डिफेंस इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट कहता है कि वेयर services for the public utility are to be made available for the contribute of the private sector is nil, where heavy investment involved without any guarantee of a profit.